Patel from the Mechanical Engineering Department. Welcome all of you to our YouTube channel. Last सभी लेक्चर में हमने डिस्कस किया था about the metal casting process. Today we will discuss about the one of the important topics of manufacturing engineering 1, that is the metal joining process. चलो स्टार्ट करते इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल जॉइनिंग प्रोसेस. मेटल जॉइनिंग प्रोसेस किसको बोलते हैं? तो जॉइनिंग प्रोसेस इज वेयर two or more pieces of parts are joined together to produce a single product of required shape and size is known as a joining process. The joining process can be classified as permanent joining process and a semi permanent or temporary joining process. Permanent joining process किसको बोलते हैं? It is done by fusing the metal together. The metal is heated to its melting state and then it is fused to become a one unit, is known as a permanent joining process. उसके एग्जांपल है वेल्डिंग, सोल्डरिंग एंड ब्रासिंग. सेमी परमानेंट और टेम्पररी जॉइनिंग प्रोसेस किसको बोलते हैं? In this, the metal is not heated. Process is carried out at a room temperature. Temporary joining process can be done using a nuts, bolts, screws and adhesives. So these are the semi permanent or temporary joining process. Okay, स्टार्ट करते हैं वेल्डिंग से. व्हाट इज वेल्डिंग? वेल्डिंग किसको बोलते हैं? तो द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग सिमिलर मेटल्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट इज कॉल्ड वेल्डिंग. ये प्रोसेस है जो दो सिमिलर मेटल्स है हमारे, उसको क्या करते हैं? हीट देते, जॉइनिंग करते विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट इज नोन एज अ वेल्डिंग. ओके, वेल्डिंग के क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू अ सोर्स ऑफ एनर्जी एम्प्लॉयड देयर विल बी अ फ्यूजन वेल्डिंग and a plastic welding. Okay, fusion welding किसको बोलते हैं? तो the metal at the joint is heated to a molten state and then it is allowed to solidify, is known as a fusion welding. Okay, fusion welding के अंदर pressure is not applied, so it is called as a non pressure welding. उसको non pressure welding भी बोलते हैं. तो these are the fusion welding process. Plastic welding, so the metal parts are heated to a plastic state and are processed together to make a joint, hence it is known as a pressure welding. There is a no filler material is required. प्लास्टिक वेल्डिंग के अंदर फिलर मटेरियल की जरूरत पड़ती नहीं है. ओके, तो इसको बोलते हैं प्लास्टिक वेल्डिंग. ओके, अब क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेसेस देखते हैं. क्या क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेसेस? तो वेल्डिंग प्रोसेस कैन बी क्लासिफाइड एज ऑटोजेनियस, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस. ऑटोजेनियस किसको बोलते हैं? तो नो फिलर मटेरियल इज एडेड टू जॉइंट इंटरफेस. उसका एग्जांपल है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग. ओके, होमोजेनियस, फिलर मटेरियल इज एडेड एंड इज ऑफ द सेम टाइप ऑफ पैटर्न मटेरियल्स. ओके, एंड हेटेरोजेनियस, होमोजेनियस, फिलर मेटल इज एडेड एंड इज वन ऑफ द सेम टाइप एज अ पेरेंटल मेटल. ओके, तो उसको बोलते हैं होमोजेनियस. Heterogeneous, so filler metal is used but it is of a different type form of the parent metals. Example brazing and soldering. तो ये autogeneous, homogeneous and heterogeneous. चलो वेल्डिंग के कौन कौन से टाइप्स है उसको क्लासिफिकेशन देखते हैं. कौन कौन से टाइप्स ऑफ वेल्डिंग हमको स्टडी करने हैं. तो सबसे पहला है ऑक्सी फ्यूल गैस वेल्डिंग प्रोसेस. उसके अंदर आएंगे एयर एसिटिलीन वेल्डिंग, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग एंड प्रेशर गैस वेल्डिंग. आगे देखते हैं आर्क वेल्डिंग प्रोसेस. कार्बन आर्क वेल्डिंग, एसएमडब्ल्यू, शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, एसएडब्ल्यू, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग और इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग. तो दिस आर द टाइप्स ऑफ आर्क वेल्डिंग प्रोसेस. आगे देखते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, seam welding, projection welding, resistance butt welding, flash butt welding, precaution welding, high frequency resistance welding and high frequency induction welding. So these are the types of resistance welding. Solid state welding process, उसके अंदर आएगा force welding, cold pressure welding, friction welding, explosive welding, diffusion welding,
कोल्ड प्रेशर वेल्डिंग एंड थर्मोकम्प्रेशन वेल्डिंग। आगे हमारा थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस, उसके अंदर है थर्मिट वेल्डिंग एंड प्रेशर थर्मिट वेल्डिंग। उसके बाद है रेडिएंट एनर्जी वेल्डिंग प्रोसेस, उसके अंदर है लेजर वेल्डिंग और इलेक्ट्रो बीम वेल्डिंग। तो दिस ऑल आर दी क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस। हम आगे सभी लेक्चर में स्टेप बाय स्टेप सभी वेल्डिंग के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे फ्रेंड्स। ओके, अब आगे देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग के कौन कौन से एडवांटेजेस है। तो पहला है जॉइंट प्रिपेयर्ड बाय वेल्डिंग हैव अ नियरली सेम स्ट्रेंथ ऑफ बेस मेटल। इक्विपमेंट यूज फॉर वेल्डिंग प्रोसेस आर नॉट मोर एक्सपेंसिव। जो हम इक्विपमेंट यूज करते हैं वेल्डिंग प्रोसेस के लिए वो एक्सपेंसिव नहीं है। इजी टू चेंज डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट की डिजाइन चेंज करनी हो वो इजी हम कर सकते हैं। इजी टू जॉइन सिमिलर और डिसिमिलर मेटल्स। मशीनिंग कैन बी रिड्यूस्ड बाय वेल्डिंग प्रोसेस। By welding, product can be prepared with the less time as compared to other process. By welding process, product can be prepared light in weight as compared to a casting process. So these are the advantages of these are the advantages of a welding process. आगे देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग की एप्लीकेशन कौन कौन सी जगह पे होती है। इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, एयरक्राफ्ट एंड शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, टू प्रिपेयर अ टैंक, boiler and pressure vessel, in thermal power plant and refinery, to prepare agricultural equipments, to prepare a pipeline and structural work, in bridge and building structures, and in a railway or locomotive, truck, trailer and crane etc. preparation. So these are the application of welding. Okay, I hope you all understands about the today's topic. लास्ट में देखेंगे सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द टुडेस टॉपिक। अगर आप ये क्वेश्चंस की एग्जाम देने चाहते हो तो हम डिस्क्रिप्शन में उसके गूगल फॉर्म की लिंक रखेंगे, वहां जाके आप एग्जाम दे सकते हो फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।